العالمین۔ آج کی تقریب کا برکت آغاز میں شروع کرتا ہوں تلاوت پاک سے۔ قاری شفاق صاحب کو مدد کرتا ہوں کہ تلاوت اور نعت کا بیان کریں اور شروع کریں اس تقریب کو۔ قاری صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے حضرت آمینہ کے دلارے نبی غمزدہ امتوں کے سہارے نبی حضرت آمینہ کے دلارے نبی غمزدہ امتوں کے سہارے نبی روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے چار سو رحمتوں کی گٹا چھا
گئی باغ عالم میں فصلیں بہار آ گئی چار سو رحمتوں کی گٹا چھا گئی باغ عالم میں فصلیں بہار آ گئی دل کا غنچہ کھلا اس میں آزم ملا ذکر صلی علی تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے ماشاءاللہ شاہ صاحب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں کونسلر اقبال صاحب جو کہ یہاں ہمارے کوٹی کونسلر بھی ہیں اور کونسلر بھی ہیں ان کا سیاست کا سفر میرے خیال میں 99 سے شروع ہوا تھا 97 سے اور ماشاءاللہ اس عرصے سے اب تک خدمت کرتے آ رہے ہیں پوری کمیونٹی کا اپنی کہ نیشنل ہو پرائیویٹ ہو کیونکہ کئی دفعہ تو ان کو ہم کام کہتے ہیں کہ کوئی بندہ آ رہا ہے بلیک برڈ یا بارڈر سے تو یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں جہاں سے بھی کوئی آتا ہے مجھے بتاؤ میں کام کرنے کے تیار ہوں ابھی الیکشن میں کوٹی کونسل کا اور اس میں انہوں نے الحمدللہ 2500 کی لیڈ سے جڑے ہوئے ہیں جو کہ پوری کاؤنٹی کونسل میں کلسٹر میں یہاں 84 ممبرز ہیں ان کی بڑھتی سب سے زیادہ بہترین کی تھی یہ انڈیپینڈنٹ گروپ کے لیڈر بھی ہیں ماشاءاللہ اگسٹر صاحب بھی یہاں انڈیپینڈنٹ گروپ کے لیڈر ہیں ابھی جوائن کیا ہے جو فخر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے سیکرٹری جنرل کھڑی ہے بارڈ کی ماشاءاللہ اس دنوں وزٹ پہ ہوئے یہاں پاکستان سے سو میں دیکھتا ہوں کونسل اقبال صاحب کو وہ اپنا ظاہر خیال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب مسٹر میئر کونسل محمد صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ایٹ لنکشائر کاؤنٹی کونسل میاں اظہر علی صاحب چیئرمین برائی فیلڈ نیلسن ایریا کمیٹی کونسلر سجاد احمد صاحب قبلہ شاہ صاحب بزرگوں دوستوں اج نے جڑے دولے جناب میئر آف برائی فیلڈ کونسل خان صاحب السلام علیکم جناب مسٹر میئر صاحب میں اپنی طرفوں اپنی پوری ٹیم کی طرفوں سے مبارکباد دینا میری ساری فیملی کی مبارکباد دینا آج ماشاءاللہ خوشی نہ دینا پورے برائی فیلڈ واسطے نہیں پوری پاکستانی قوم واسطے ہے کیونکہ ہر بندہ جاننا ہے کہ مسٹر میئر صاحب ایک سیاسی کارکن بڑے عرصے دراز تو یہ نہیں کہ نویں سیاست ہے ماشاءاللہ لگنے جوان ہیں لیکن بڑے سیاست دان ہیں ٹوٹے سیاست دان جی آتے ہیں الحمدللہ کوئی ممبر آف دی یورپین پارلیمنٹ بنانا ہوا ہے کوئی کونسل بنانا ہوا ہے ماشاءاللہ خان صاحب نے بڑے پیشکش اگے ہر بندے نے آپ نے لیکن آج ماشاءاللہ میرے خوشی ہو رہی ہے کہ خان صاحب جڑا ہے میئر بڑے برائی فیلڈ نے تو ساری میں جناب مبارکباد دینا اپیل کرنا کہ پورا سال جڑا ہر بندہ تعاون کرے شکریہ اس کے بعد بتا دیتا ہوں کونسل یاسر اقبال ہے جو کہ یہاں برائی فیلڈ سے کونسل ہیں ماشاءاللہ پچھلے 15 سال سے رجسٹر بھی ہے اور کونسلر بھی ہے ماشاءاللہ ان کی کافی خدمات ہیں یہاں برائی فیلڈ ٹاؤن کے لیے بھی اور فیڈرل کونسل میں بھی ماشاءاللہ جہاں بھی کوئی بھی سیاسی فنکشن ہو تو یہاں بھی ضرورت ہو کہیں مظاہروں کے بعد آواز کھڑی ہو تو سب سے پہلے وہاں موجود ہوتے ہیں کونسل یاسر اقبال صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم Mr. Mayor of Pendle, Councillor Ahmad, Mr. Mayor, Councillor Khan of Ryfield, councillors, brothers, friends, comrades, Assalamu alaikum. It gives me great pleasure not to be in the company of one mayor, we're in the company, alhamdulillah, of two mayors. One, you've heard, Councillor Ahmad sits on the far left, is the Mayor of Pendle. Mayor of Ryfield, Councillor Khan, is who we are here gathered for today. And it gives me great honour to make this speech, to be here, to support Councillor Khan in becoming the Mayor of Ryfield. And anyone that's been the Mayor of Ryfield or Pendle or any Mayor of any other borough or town knows how much of a privilege and honour it is to become the Mayor. And it's a record in Ryfield, in fact in many boroughs, that Councillor Khan has become the Mayor of Ryfield within 3 years of becoming a councillor. That hasn't happened before. And when you leave this room, you'll see there's a board outside of the list of mayors since 1992. I think County Councillor Azhar Ali sits here. He was one of the first mayors of Ryfield.
Briarfield has created a lot of talent, a lot of special people, and Councillor Khan is one of them people. I think anyone here that knows Councillor Khan, Mr. Mayor, sorry, you have to get used to Mr. Mayor. Anyone that knows Mr. Mayor knows that he is an honest, straightforward person. What you see is what you get with Mr. Mayor. There's no hidden agendas. He is what he is, and whether anyone likes it or not. And I think it's a great honour for this town, Mr. Mayor, that you are the first citizen of this town, of this great town, someone that has contributed to society, to this community, not only politically, socially, and in any other way, has been contributing for many, many years. And it gives me great pleasure that you have been chosen as the mayor. And of course, when I said that Briarfield has created many Councillor Sajjad Ahmed, who has been elected as the deputy mayor for the second time in Briarfield, again, another record being broken that we haven't had a second term mayor. Not only has he become the deputy mayor of Briarfield, he's become the chairman of the Briarfield, Reedley and Nelson Area Committee, which in itself is a great success. And I want to thank all of you finally for showing the time, the love for Mr. Mayor, and for us as a community, us as councillors, in supporting Mr. Mayor. And Mr. Mayor, can I say this in the presence of these people, that we will be here supporting you. Whatever you need from us, we will support you. You have done that for many years. It's only right that now is our time to contribute towards your assistance. Anything you need, we are here as a community, as a council. And I wish you great success in the future. And I hope that you enjoy the year, and I'm sure you will. Thank you. इसके बाद बता देता हूँ मियादर साहब को, ये भी काउंटी काउंसलर हैं। मियाँ साहब भी अपनी जगह जो है ये MEP साहब सजाद साहब यहाँ हमारे लिए हाजिर है। यहाँ ये ब्राइफील्ड के लिए माशाल्लाह बड़े एजाज़ की बात है। जैसा कि असर बताया है, यहाँ की मिट्टी बड़ी जरहेज है। यहाँ से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं यहाँ से निकले हैं। रजा अफसर जो मंचल में MP है इस दफ़ा, वो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं। सजाद साहब माशाल्लाह MP है, हमारा फख्र है। पूरे यूरोप में, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी उन्होंने की है यूरोप में। जब भी वहाँ मुतरफ हुए थे, इन्होंने यूरोपियन मंडी में पाकिस्तान की रसाई के लिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कोशिश की है, मेहनत की है और अपने एक नाम और मुकाम बनाया है माशाल्लाह। और मैं दावा देता हूँ माशाल्लाह के अपने हयात का इज़हार करें। Bismillahirrahmanirrahim. The worshipful Mayor of Pendle, Councillor Amir, Mr. Mayor, Briarfield Town Council, Councillor Muhammad Khan, Mayor Aziz, Buzurgo, Bhaiyo Dosto, Assalamu alaikum. May I firstly apologise for my late arrival. I was in London earlier and it took me slightly longer than I anticipated to arrive here. But I felt it was important because, firstly, Briarfield is a very important place for all of us. So many faces as I look around are people who have dedicated their life to the service of Briarfield in so many different ways. And Councillor Muhammad Khan is one of those individuals who arrived in Briarfield as a young man at that time, very smart, with a full head of hair. And it's always a fact that the best representatives for any area are those individuals who are from the area, from the community, and have lived there for a substantial amount of time. So they have an understanding of how those communities operate and what the needs of that area are. And on all of that basis, Councillor Khan certainly qualifies for the position that today he holds. And I congratulate him on behalf of everybody gathered here on having made this tremendous achievement as a part of his journey of service to Briarfield. So many congratulations. To speak for too long at all, but there's just one message I think is important and I would like to pass on. And that is about circumstances that concern so many of us in relation to the country of origin for so many of us, and that is Pakistan.
and some of the most recent challenges and developments that we have seen happening in that part of the world. Of course, the best wishes of everybody in this room always remain with Pakistan. And we stand absolutely steadfast in our commitment to serving the United Kingdom and Pakistan and relations between these two countries. And therefore, the progress that the British Pakistani community has made and the strength that we hold has a direct bearing not only on the condition of this country, but Pakistan also. And it's in that spirit that I know that we as a community will continue to hold that goodwill in unity, united as one, standing firm in the interests of ensuring that Pakistan remains strong, united and a force for good in this world, and we will remain committed to ensuring that the United Kingdom continues to invest and build in its relationship with Pakistan as well. But our local representatives are the absolute bedrock of this society. And it's with that in mind that I offer my full support, as always, to all of the local representatives that are present here, all of whom I have known pretty much all of my life. Some of them are childhood friends from school. Some of them have been political colleagues in a variety of guises over the years. And I hope that that spirit of cooperation will continue as we move forward. Certainly, both the Mayor of Pendle and Mayor of Bryfield should feel free to call on me at any time that I can be of service to them and to Pendle or Bryfield. Thank you. इस तकरीर के में मालिक सुस्ती जो है वो माशाल्लाह अंकल खान है। जैसा कि सब स्पीकर ने बताया कि माशाल्लाह इस तरह को जो है वो तो कौंसल तो भी बने 30 साल पहले बने हैं, लेकिन 30 साल से खिदमत करते आ रहे हैं। इनको किसी और की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एज ए ग्रुप हमने डिसाइड किया। अंकल जफर जो हमारे लीडर थे हमारे आगे लगे, हमें साथ लिया, इनके पास गए और कहा कि आप खिदमत करते हैं और आप आगे आए, आप एज एक्टिव मेंबर बने। फिर इंशाल्लाह 3 साल पहले हमने इनको एक्टिव मेंबर बने हैं, माशाल्लाह अपनी मेयर बने हैं। अंकल खान साहब अपने ख्याल खासकर मेरी सारी पूरी टीम काउंसलर ने जोड़े मेरा बड़ा साथ दिता है, इन्हों की बहुत मेहरबानी। मैं इंशाअल्लाह मतलब अपने दिल मतलब चौखा चौखा शुक्रिया अदा करना जो टाइम कढ़े तो मैं भी ताबेदार हाँ, किसी किस्म का कोई चीज़ मैं ताबेदार हाँ तैयारी राती मतलब जिस वक्त बहुत मेहरबानी जनाब। थैंक यू वेरी मच। सबसे आखिर में बता देता हूँ मियां साहब जो कि ब्राइफील्ड का चेहरा है, माशाल्लाह ब्राइफील्ड का फेस है यहाँ इंग्लैंड पूरे में। मियां साहब की माशाल्लाह काफ़ी खिदमत हैं NHS के लिए। लेबर गवर्नमेंट थी जो 90 में 99 में मिलान में उसके एडवाइजर भी रहे हैं माशाल्लाह। अभी कोटी कौंसल के ऑपोजिशन लीडर भी हैं, अभी भी रहे हैं, पहले भी रहे हैं एज इंडिपेंडेंट। ये बहुत बड़ा जवाब है। कोटी कौंसल का एक डिवीजन होता है, मुस्तावी डिवीजन होती है, वो डिवीजन है हमारी यहाँ और उसकी माशाल्लाह नुमाइंदगी करते हैं यहाँ पूरे ब्राइफील्ड की। एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इन्होंने 2-3 इलेक्शन लड़े हैं, 32 कामयाब रह सके। इंशाल्लाह ये हमारे लीडर हैं और इंशाल्लाह जब रहेंगे इंशाल्लाह। 92 में मेरे हाथ में जब हम ये साहब यहाँ मेयर बने थे ब्राइफील्ड के, 25 साल हो गए, 33 साल ये साहब पॉलिटिक्स में है और इन्होंने माशाल्लाह ये इंडस्ट्री है, मेरे बाहर से लेकर नई बशर है, जैसे साहब हैं, सही नस्ल को पलवान ने चढ़ाया और ये साहब ने चढ़ाया है। इनकी लीडरशिप भी हम यहाँ करे हैं। कदर तो ये साहब की आप शुक्रिया अदा करें हमारे मेंबर। Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Mayor of Pendle, Councilman Rana, the Mayor of Bradfield, Councillor Suleiman Khan, councillors, former mayors, former MEPs, distinguished guests, Assalamu alaikum. MashaAllah, अफ्रील दिन मुझे फोन आया सी पीटर बराती चौधरी साबर साहब दोस्त ने मेरे ते अपने भाई खान दे भी दोस्त ने पुराने, तो मैं बड़ी खुशी कि खान साहब मेरे बन रहे हैं। उन्होंने मैंने आख्या कि तुसी लाजमी है इन्होंने मेरे का चैन पवा के पीटरबल लिया है। बर्मिंघम किसके जाइए जिथे जिस शहर जाइए ना तो चौधरी मोहम्मद खान का नाम लिए सारे कहते साडा खान है जी साडा चौधरी है, लेकिन असं कहते साडा चौधरी के ब्राइफील्ड है, सानू फख्र है इस चीज़ की।
Chaudhry Muhammad Khan came here in 1976 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਪੀਟਰਬਰਾ ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਸਜਾਦ ਨੇ ਯਾਸਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇ ਇਜ਼ ਪਲੇਡ ਆਲ ਦ ਰੋਲਸ ਲੇਕਿਨ ਯਾਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ लेकिन इस एक चीज़ तो नहीं प्रोवाइड कर सकते वो है टैक्सी टैक्सी प्रोवाइड करनी है उस्मान ने या चौधरी अकरम ने या चौधरी सईदा ने उन्हें टैक्सी प्रोवाइड करनी है गड्डी खराब हो जाए तो उन्होंने जिम्मेदारी साडी जिम्मेदारी लेकिन on a serious note there's people in this room ब्राइटन के लोग ने जिन्होंने सानू ऐसे काउंसिल बनाया सी मैं बनाया सी अर्शद बैठे नईम अजीनीफ और काफ़ी ने मंजूर सारे इतने मेरे बन चुके हैं लेकिन फखर ब्राइटन का कि तुम बोर्ड पर जाओ उतों 1992 से लैके हूँ तक सारे मेरे अंदर नाम लिखे ने मेरे बनना नहीं लेकिन कम्यूनिटी में सर्विस भी करते हैं प्रोवाइड सपोर्ट भी करते हैं उन्होंने उम्मीद है कि मेयर खान ब्राइटन बहुत अच्छे मेयर साबित होंगे साड़ी खूब ताब ने तो मैं चाहना कि असी सारे इस्तेकबाल करिए once again on behalf of Chaudhry Muhammad Khan, the mayor of Bradfield, thank you everybody for coming along. Thank you for coming. Enjoy the food and Allah Islam. फिर भी खिताब में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप तशरीफ लाए या इलाहा नबीन तूने जो करम फरमाया हमारे भाई खान साहब जो मेहरबानी है इन्हें दुनिया व आखिरत की इज्जत अता फरमा ये बड़ी अच्छी शख्सियत है पाकिस्तान में भी यहाँ भी इनकी बड़ी खिदमत है और जितने लोगों ने इनके साथ ताउन फरमाया है उन सबको भी दुनिया व आखिरत की इज्जत अता फरमा सारी कम्युनिटी यहाँ इकट्ठी बैठी है हम सबको आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक व इत्तेहाद की दौलत से मालामाल फरमा हम सबको एक दूसरे की मदद इमदाद करने की तौफीक अता फरमा अपने से बड़ों की इज्जत छोटों से प्यार मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा हम सबको एक अच्छा सच्चा कामिल अकमल मुकम्मल मुसलमान बन के ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की दस्तगीरी फरमा मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम और सलामती अता फरमा जिस मुल्क में हम रहते हैं इस मुल्क में भी हर लिहाज से खैर फरमा बरकत फरमा हमारी दुआ को कबूल फरमा हमसे दरगुजर फरमा हम सब की सारी गलतियाँ गुनाह मुआफ़ फरमा या अल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का सदका हमारी दुआ को कबूल फरमा भाई खान साहिब को सिर्फ सलामती वाली लंबी जिंदगी अता फरमा अल्लाहुम्मा रब्बना आइज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मादा या वासिअल करमी सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका Thank you.